We are now getting exclusive visuals of the CCTV control room which monitors the Red Fort area from Chandni Chowk, and we are now going to put out before our viewers on the screen exactly how, and these are the images, how this explosion appears to be to have taken place. These are the visuals that we have managed to access. And these 4 images from various locations of Chandni Chowk in and around the Red Fort area. And there you see in the bottom left window is where the exact moment the blast took place. Anand, we have managed to access the CCTV or the control room in Chandni Chowk and the exact time when the blast took place there on the screen. Yes, 6:52 p.m. is what the confirmed time is. There you go, the bottom left of the screen where the blast happens. That was the Red Fort signal CCTV camera where this blast has happened, and the timeline News18 India had said that it is around 6:50 p.m. and the Commissioner of Police had confirmed this time at 6:52 p.m. So that is the exact time when this blast happens. It's the bottom left on the screen, the viewers, and then suddenly it will be just a blast and a whole splash that would happen, and we know it's a crowded intersection. Look at the vehicular traffic all around that area. Were they waiting for peak traffic before engineering this blast is a question that perhaps will be answered soon by the investigators. But look at how packed that traffic area is, that traffic light is, and suddenly it goes kaboom. And clearly the CCTV camera is also damaged. Now, which is the exact spot? They will slow-mo it frame by frame, and you can then identify where this car was standing. In fact, if you were to look at it very carefully, it's the top left corner of the bottom left camera. So if you see the top left cap, that's where the sudden splash comes. So if we go frame by frame, and the exact car can be seen, and then the blast happens. So there is a huge flash, the flare, but the blast is happening at the back of that. It's on the top left. Do you see? There you go. So that car was not right at the front of the signal. It was somewhere in the 5th or 6th lane behind a few cars, and that's where this car was, and when this blast has happened. And you can see that at that time there is this huge blast. Everything is being captured in CCTV. So now they can backtrack, and then they can go back and see where this car actually came out of. Now you see, there you go. That's where that blast is. And if you see very carefully, viewers, we'll try and isolate that and break this entire footage frame by frame to identify the exact point where this car was. And that's what investigators will also be doing, to identify where this car was, and was there a trigger, did something happen, or was it still moving. Eyewitnesses had said that this vehicle was slowly moving towards, because of that intersection and the traffic light, and it was slow moving traffic, but you can see the density of vehicles around. It is peak traffic time in Red Fort at that time, and that's why perhaps this time was chosen. The car is brought out of the parking lot at 6:48, and at 6:50 it comes out, and between 6:48 and 6:52 is when this blast happens. In 4 minutes after that car had been stationed there at that Red Fort parking lot from 3:19 p.m. to 6:48 p.m., nearly 3.5 hours. But absolutely, Anand, thank you so much for breaking down these visuals. And we have these visuals right here on the big wall here in the studio. And we're constantly putting these visuals out for our viewers to manage to assess what exactly was the impact. We have very many of the people here at work who stay very close to this area, particularly closer to Delhi Gate. And they also, in fact, could sense the impact, the sound of the blast. Such was the impact, and you can see it right here at around 6:55 p.m., 6:50, and there's many seconds there is exactly when the blast took place, and this is the exact time that the CCTV is showing when the blast really happened. And you can see the amount of traffic in and around this Chandni Chowk area. This is the Red Fort Chowk towards Chandni Chowk, and that's where the car was moving. On this side where the Red Fort really is when the blast took place. We also have our colleague Anshul joining us on the broadcast. Anshul, you managed to access the CCTV for us, exactly showing the point, the time when the blast happened. Well, yes, I'll just try to explain you what transpired on that very hour. If I could just move out of the frame, and if we would just show you these CCTVs, these bunch of CCTVs that are put right in front of the Red Fort. It is from the opposite direction that the vehicles were moving in. That is from the Sunehri Bagh parking side that these vehicles were moving. And suddenly, as soon as the red lights that you are seeing on your screen, near these red lights, the vehicles came, and in fact, the I-20 came to and reduced its speed, and post that
there was a blast that happened from the rear end of the vehicle is what the investigators have found out. Now, why the rear end was chosen, this is also another very important point, because this was a CNG operated vehicle that was used, and hence CNG is an inflammable material, and the ID was not ready to the point that splinters and other elements could be put into this, and hence this vehicle was particularly used so that the impact of blast could happen over a larger area. Now these visuals that you are seeing on your screens are of the CCTV from which this footage has been captured that we are showing to our viewers, and this is at this exact location that this blast initially happened, and then eventually the blast was of such magnitude, of so much sound, that several of the people who have injured actually have injuries in their eardrums as well. So can you imagine the magnitude of the blast? But what is pertinent to note that a CNG vehicle, a petrol vehicle was used, and the explosives were kept at the rear end from where the blast happened, so that the impact of the blast could be maximized. So definitely at this point in time, it is definitely seeming like that it was a planned attack and not an attack that happened while the explosives were being moved, because the accused, Dr. Umar, stayed inside the parking lot, inside his vehicle for more than 3 hours, waiting for the sun to set and waiting for the peak hours to start out here in the national capital, so that more and more people could be on the streets. Definitely it is seeming like an attack, a panic attack that has happened, or an attack that has happened out of panic, because there were people, the entire nexus was being busted, people were being arrested, their things, their explosives, their contrabands were being taken into custody, and that could be one of the reasons why this entire attack was done in such a haste. We have also been told that previous recce's of this location was also done. So definitely all these things are pointing towards a clear connection between Al Falah University, doctors at Al Falah University, and the blast out here in the national capital. But just one missing link to this entire puzzle, the DNA test. Once that DNA samples comes out and it is proven that the person who was driving the vehicle was actually Dr. Umar from the Al Falah University, then this entire chain will come to an end. The investigators have been able to clear off the other layers. The pictures are out. The CCTVs have been accessed, and they have gone through that as well. But just that missing link of the DNA testing, if that is proven, then a clear link will be established between Al Falah University and the blast that happened out here, right outside the Red Fort. Right, absolutely. Thank you so much for those details there, Anshul. We also have our colleague Anand Tiwari from News18 India, who's now joining us on the broadcast. He's the one who's also managed to access the CCTV images for our viewers, and this is the exact time at about 6:50. Just milliseconds into 6:50 is when the blast took place, and we are putting out these visuals for our viewers when that happened. That circled red ball of fire that you see just seconds into that blast, and there you see the frame by frame depiction of the blast when it took place. Anand, ये CCTV images से ये पूरी तरह से establish हो रहा है कि ये डॉक्टर उमर नबी allegedly जो ये vehicle चला रहे थे, जो ये I-20 चला रहे थे, 3 से 3.5 घंटे उस parking lot में थे. उन्होंने शायद wait किया कि peak hours शुरू हो जाए. And we are here also attempting to divulge the psyche of this attacker, the psyche of this indoctrinated doctor who said that whatever said and done, kuch to damage hum karenge. He did not have the shrapnel. The bomb was not fully made, but he did carry the explosive into this heavy traffic area in Chandni Chowk. Anand. देखिए बिल्कुल ये न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले जो ये सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें ब्लास्ट होते हुए नजर आ रहा है, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी मायने रखता है. ये एक एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा केस डायरी में. इसमें आप देख सकते हैं ब्लास्ट होने का जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है वो इसमें नजर आ रहा है 6:50. ये जो 4 विंडो देख रहे हैं कंट्रोल रूम की, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की, आप उसमें बाकायदा टाइमिंग 6:50 नजर आ रहा है. उसी दौरान एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जो सीसीटीवी की जो इमेजेस हैं वो ब्लैक हो जाती हैं. ये पूरा चांदनी चौक का इलाका, आसपास का जो पूरे मंदिर हैं, जो प्रीमाइसेस हैं, दूसरे स्पिरिचुअल प्रीमाइसेस हैं, उनको ये सीसीटीवी कवर करता है. और ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें लाल किले के प्रीमाइसेस के अंदर और बाहर दोनों की सुरक्षा जो है वो इन सीसीटीवी कैमरे से की जाती है. 6:50 ही जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी टाइमलाइन के मुताबिक 6:50 का ब्लास्ट हुआ था और ये सीसीटीवी फुटेज भी इसी की गवाही दे रहा है. इसके पहले 3:19 पर न्यूज 18 इंडिया ने अभी कुछ देर पहले एक और सीसीटीवी फुटेज
प्ले किया था, रन किया था, उसमें आप देख रहे हैं कि 3:19 पे जो उमर मोहम्मद है, जो जैश का कथित आतंकवादी है, वो I-20 व्हाइट रंग की I-20 कार लेके रेड फोर्ट की पार्किंग में एंटर कर रहा है और बाकायदा वो गाड़ी में नजर आ रहा है बैठा हुआ। उस दौरान उसके साथ कोई और शख्स मौजूद नहीं है। सोमवार को चूंकि रेड फोर्ट बंद होता है, उस दौरान भी वो करीबन 3 घंटे 3 मिनट तक इसी पार्किंग में बैठा रहा। आप देख सकते हैं फुटेज में कि पुलिस की बैरिकेडिंग वहां पे नजर आ रही है और रेड फोर्ट में कोई और गाड़ी उसके आसपास नजर नहीं आ रही है पार्किंग में। ये गाड़ी एंटर करती है, वहां पर 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहता है। और जैसा कि आपने बताया कि जब भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है, भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सोनीपत, पानीपत के कई जो कारोबारी हैं वो शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक आते हैं और उसके बाद कई लोग जो है वो फोटो या सेल्फी लेने के लिए रेड फोर्ट के बाहर इकट्ठा होते हैं शाम के दौरान। और उसी दौरान मोहम्मद उमर की गाड़ी में ब्लास्ट होता है। इसके 2 महीने या तो ये पैनिक में ब्लास्ट हुआ या ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी फिदाइन हमले की, कि जब भीड़ काफी रहेगी रेड फोर्ट के पास तब ये कार में ब्लास्ट को अंजाम देना है। किस तरह से ब्लास्ट किया गया, क्योंकि मौके से ना कोई टाइमर, ना कोई वॉच, ना ही कोई कील या कोई दूसरे जो है उपकरण मिले हैं, तो ऐसे में संभावना यह चाहिए जा रही है कि जो ब्लास्ट था उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी, हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट था, कि अगर कोई रिमोट कंट्रोल या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है अगर वो उमर कैरी कर रहा था तो वो भी उस ब्लास्ट के बाद नष्ट हो गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज एक काफी बड़ा एविडेंस है जांच एजेंसियों के लिए। जी आनंद, ये बताइए, आप उस पार्किंग लॉट की बात कर रहे थे जहां पे ये गाड़ी तकरीबन 3 से ज़्यादा घंटों तक खड़ी रही। पॉसिबली डॉक्टर उमर जो ये गाड़ी चला रहे थे वो पार्किंग लॉट में मौजूद थे। वहाँ पे जो कर्मचारी थे या वहाँ पे जो पर्सनल थे जो पार्किंग लॉट देखते हैं, क्या उनसे कोई पूछताछ हुई है? इसकी कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए बिल्कुल, चूंकि पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए पर्ची कटवाना पड़ता है और उसके बाद ही गाड़ी पार्क होती है। सुनहरी मस्जिद जो है उसकी पार्किंग में से कहते हैं कि लाल किला प्रीमाइसेस के अंदर कुछ और भी छोटे छोटे प्रीमाइसेस हैं। तो जाहिर तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको ये तमाम सारी चेन जो है टाइमलाइन में पता चली है कि कैसे गाड़ी एंटर करी। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है किस शख्स ने ये गाड़ी की पर्ची जो है वो काटी थी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां रेड फोर्ट प्रीमाइसेस के आसपास खड़ी होती हैं पर्ची लेके, लेकिन ये गाड़ी 3 घंटे तक खड़ी रही और उस दौरान इस पर किसी की नजर नहीं गई। जाहिर तौर पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक होगा। और अगर आप फरीदाबाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा गौर करेंगे तो जो मुजामिल और एक जो लेडी डॉक्टर को जो फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कमिश्नर ने, तो उस दौरान कहा था कि एक डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो हमारे केस में फरार चल रहा है। और उसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस एक ट्वीट करती है और ट्वीट करके बताती है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद ये वजह थी कि उमर को मीडिया के जरिए ये बात पता चल गई थी कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसके पीछे एजेंसियां लगी हुई हैं, उसको ट्रैक कर रही हैं। और चूंकि फरीदाबाद में अगर पहले 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद करीबन 2000 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट अगर बरामद होता है, अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल और दूसरे कार्टेजेस बरामद होते हैं, तो उमर को डर जरूर लग रहा था कि वो गिरफ्तार हो सकता है। और उसके पास उस गाड़ी में विस्फोटक है, क्योंकि उसने अपना फोन 31 तारीख को ही बंद कर दिया था और उसके फोन की जो लास्ट लोकेशन है वो उसी यूनिवर्सिटी में पाई गई थी जिस यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर मुजामिल है वो पढ़ाता था, जिसको गिरफ्तार फरीदाबाद पुलिस ने किया था J&K पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में। तो उमर लग रहा था कि कहीं ना कहीं डरा हुआ था। जो अब तक की जांच लग रही है कि उमर शायद डरा हुआ था और उसको लग रहा था कि अब वो एजेंसियों के हद पे चढ़ सकता है, इसलिए शायद हो सकता है कि उसने फिदाइन हमले में खुद को उड़ा लिया हो, ताकि जो लार्ज कॉन्स्पिरेसी है उसके जो बाकी हिस्से हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता ना चल पाए, क्योंकि उमर की गिरफ्तारी से ये पूरी जैश की जो साजिश थी उसके कई राज जो है वो पर्दा हो सकते थे। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि उसने खुद को इस गाड़ी से ब्लास्ट करके उड़ा लिया और उसके में जिसमें कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई, कई लोग घायल हुए, या ये पैनिक में लाल किले के आसपास ये ब्लास्ट हुआ, गाड़ी को कहीं और ले जाना था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगातार ये बात डाउट कर रही है कि 3 घंटे तक आखिर एक जैश का आतंकी पार्किंग में क्या कर रहा था और उसने 6:50 का टाइम ही क्यों ब्लास्ट करने के लिए चुना जब काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।